second, let me just get it on the screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this normally, when we talk about supply chain management, it is about managing the chain of supply. When we say chain of supply, that means the supply, inward supply as well as outward supply. Inward supply is basically we are referring to the raw material that we require, and outward supply is we are talking about the products that we are sending it across to the customer. Okay, so inward supply chain and outward supply chain. So here we are only just going to look at the basic supply chain management concepts. Okay, supply chain management in itself is a industry. तो हम उसको एक चैप्टर में कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि हम सिर्फ एक ओवरऑल व्यू ले रहे हैं. फाइन. So these are some of the definitions which people have provided with. Some of them say it's a combination of art and science, to in which basically the best way of finding out the raw material and delivering it to the customers. So trader के case में वो ठीक है. When we talk about management of a network of interconnected businesses, okay, involved in the ultimate provision of product and service package required by the end customers. So it actually spans across from supplier and goes up till the customer's customer. That means all the organizations which are involved in satisfying a customer demand will be a part of the supply chain. That's the easiest way how we can define it. Okay. The retailer is a part of a supply chain. Going backwards, the wholesaler will be a part of the supply chain. Going further back, the dealer or the distributor maybe will be the part of the supply chain. Then even before distributor, there are some concepts called as master stockists. Okay, or directly the manufacturer. Going backwards, the supplier of the manufacturer is a part of the supply chain, and supplier, if he himself is also a manufacturer, then his supplier also becomes a part of the supply chain. Okay, so that means the supply chain will span across from supplier and may go till the end, till the customers, that is customer's customer, until and unless the product or service gets consumed. Okay, or exhaust existing. Fine. So एक तरह से देखा जाए तो manufacturer is the customer of the supplier, distributor is the customer of manufacturer, wholesaler is the customer of distributor, and so on. Fine, until and unless the product gets consumed completely. Then Apex has defined it as designing, planning, execution, control, and monitoring of the supply chain activities, with the objective of creating net value, building a competitive infrastructure, leveraging worldwide logistics, synchronizing supply with demand, and measuring performance globally. So when we talk about management, supply chain management, so we need to also look at the performance of the supply chain, performance in terms of the resource utilization, performance in terms of customer satisfaction achievement. Okay. So there is another definition which says management of the interconnection of organization, that is done. The most important element, that is the supply chain management objective, is to satisfy the end customer, and the objective of supply chain management is to meet the requirements of end customers by supplying appropriate products and services when they are needed at a competitive cost. And not only just when they are needed, but also
where they are needed. Okay, where they are needed. So supply chain management actually answers all the 4 P's of your marketing: making the product available, making it available at a affordable cost, that is price, at the right price point. Product ho gaya, price, then making it available where the customer wants, that is place. Okay, and जो इसका जो पैकेजिंग वगैरह रहता है, that also helps in terms of informing the customers. Okay, so एक promotion को इतना ज्यादा वो टच नहीं करता है, but other than promotion, everything, but it supports promotion. For example, if you have already run a campaign saying that my products are available in your nearby outlets, and when the customer goes and he is not able to find it, then your promotion activities have gone for a toss. So it also supports those activities. Fine. The 5 performance objectives of supply chain is quality, speed, dependability, flexibility, and cost. Sorry. So when we talk about quality, it is in terms of the product in which the fashion in which the product is being made available. If I am not able to deliver my product without any damages or so automatically the customer is not going to accept it. आपने कई बार देखा होगा कि आप प्रोडक्ट खरीदने गए और उसका आउटर पैकिंग सिर्फ खराब था, जिसकी वजह से you would have not taken up that. Instead, you would have asked them to give you a fresh piece. Correct? Has that happened? Yes, sir. Yes, sir. But actually, product तो फिर भी damaged नहीं था. So that means why the packaging gets damaged when there is overstacking. अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर और भी दूसरे प्रोडक्ट्स उसके सेम और भी ऊपर ऊपर रख रहे हो, तो उन सब का वजन ये नीचे वाले प्रोडक्ट पे आता है and the packaging may get damaged. So even the packaging should be strong enough, or rather the packaging stacking levels have to be limited. Okay, depending upon the quality of packaging. And आदमी पैकेजिंग लेने के बाद में पैकेजिंग देख करके जरूर लेता है, बट उसके बाद में पैकेजिंग रद्दी में ही जाती है या फिर कचरे में जाता है. People don't use packaging. Right. Correct? Sir. Now, coming to the next performance objective, that is speed. The speed with which you serve your customers. Okay, we have taken an example of Amazon delivery system just some time back. Okay, that they promise you that in 5 days it would be delivered, and they deliver it in 4th day or maximum 5th day. Fine. So that is about delivery speed. अगर मैं आज का आज मैंने we talked about there had been instances wherein the product belongs to Mumbai itself. You have placed an order from Mumbai, but still it is not moved. Why? आपको फिर भी वो 4th या 5th डे में ही मिलता है. क्यों मिलता है? Because अगर वो पहले आपको डिलीवर कर भी देगा, it is not going to give him any advantage. Instead, he takes time to create a lot, और अगर मान लो उसी साइड से और भी मटेरियल पिकअप हो रहे हैं, so that is the time he will schedule, so that he is able to reduce his cost of delivery. तो तब तक वो देखते हैं, वर्कआउट करते हैं, और जब टाइमलाइन के पास में आ गया एंड स्टिल अगर उस साइड का लॉट का काफी ज्यादा नहीं हो रहा है, तो दे विल जस्ट पिक अप एंड इनिशिएट द डिलीवरी प्रोसेस. क्लियर? Yes, sir. You can depend on your supply chain. So dependability, on time, in full. That means जितना आपने ऑर्डर किया उतना पूरा. Fine. Then comes the flexibility. Flexibility to cope with the changes. Flexibility to cope with the changing demand. Okay.
कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है. अकॉर्डिंगली योर सप्लाई चेन हैज टू मैनेज. अभी कोरोना के चक्कर में ऑल ऑफ अ सडन सप्लाई चेन्स पे जो प्रेशर आया था वो जबरदस्त था. ओके, एक अचानक डिमांड भी बढ़ गया क्योंकि लोग स्टोर कर रहे थे, है ना, और वहीं पर उनके पास में डिलीवरी के लिए ड्राइवर्स भी नहीं थे क्योंकि काफी लोग वो यूपी बिहार के थे जो भाग गए, वापस यूपी बिहार चले गए. Right, sir. So a tremendous pressure that which supply chain has actually experienced at that time. Okay, and supply chain की वजह से सब possible भी हो पाया. Let us look at the phenomenal example of vaccines distribution. The key element is the supply chain. Manufacturing के लिए तो देखो 3-4 कंपनीज आ गई अभी. There are other companies also which are actually working upon. दो तो अपना vaccines आ गया. There are other companies which are working upon. उनका भी vaccines आ जाएगा तो फिर manufacturing is not a problem. Problem is ensuring the delivery of the vaccines till the last point where even a single human being is there. Correct? So that becomes a challenge. And then what is the cost at which the supply chain is going to make that thing happen? Okay, so therein they tie up with local vendors. अभी आप लोगों को मालूम है कि Amazon का there is a pickup points also. उन लोगों Yes, ने sir. लास्ट माइल Shops में डिलीवरी रहता के है. लिए लोकल लोगों को भी टाई अप किया है और उधर पर सारा मटेरियल लाके रखते हैं और वो लोग उधर से लोकल डिलीवरी करवाते हैं. पता है ना? सर 3PL Yes, sir. कंपनी से भी कराते हैं ना, ब्लू डार्ट वगैरह से. हाँ, वही 3PL वही है. यस सर. लास्ट माइल डिलीवरी के लिए काफी ये किया हुआ है. आपके पास में जो भी बंदा आता है ना डिलीवरी वगैरह के लिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के उससे जरा इधर उधर का बात करने का. इट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मोर नॉलेज. ओके, सो नेक्स्ट टाइम प्लीज डू इट. we'll just finish this slide and close. Okay, so the terminologies which are actually involved here are supply side of supply chain and demand side of the supply chain. So if you observe here, this is your manufacturer, this is your supplier side. तो आपका first tier supplier, second tier supplier, that is supplier. This is your supply side of the supply chain. This is your demand side, wherein it goes to the distributor, from distributor to the wholesaler, the retailer, and till the end consumer. So this is on this side, it is physical distribution of your product. So across, okay, but majorly it starts from this side. यहाँ पर तक आपका प्रोडक्ट नहीं, आपका रॉ मटेरियल मूव करता है. Then logistics is applicable on this side as well as on this side too, and it may get extended up to the customer, but normally customer के वहां पर तक का बहुत सारी companies खुद नहीं करती है. It is given to somebody else, that is third party logistics. Materials management is majorly spanning from this side and it goes up to it is delivered to your main customer. उसके बाद में उसका lookout है. Okay, he has to manage within the cost. Supply chain is spanning all across. Now, what is it that is moving around is the information related to the market. It influences not only just the manufacturer but also the supplier. Okay, so ये आपका reverse जा रहा है. Product related information, promotion related information from manufacturer to this side, not on this side. Okay, so that is what it talks about. And then in this case, when we talk about supply chain, your purchase department becomes a very it plays a very crucial role. So they liaison up with the suppliers, tie up करेंगे, उनका पूरा supplier relationship management is depending upon it depends upon the purchase department. Okay, so that becomes crucial. So ये आपका काफी important function रहता है, जहां पर कि आपका
coordination activities becomes more important. Okay, इसके बाद में supplier selection है, wherein you actually use अगर आपके पास में multiple supplier है तो which one to choose. So I hope you remember we have used that factor rating method facility location में. Do you remember that? Yes, sir. Weights वाला. Yes, sir. हाँ, वही सेम हम लोग यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स लेते हैं, उनका वेट्स देते हैं, एक सप्लायर का स्कोर, दूसरे सप्लायर का स्कोर, एंड यू वर्क आउट वेटेड स्कोर, और जिसका ज्यादा है he becomes the preferred supplier. Okay, and these are the factors which you take into consideration based on short-term relationship with the supplier or long-term relationship. In reality, you will always take both. Okay, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं चलते हो. Fine, it is always a combination. So we'll stop there itself. इसके बाद में sourcing वगैरह का है. We'll start supplier selection, wherein Yes, you yes. use factor rating method to identify the best suppliers. Okay, so quantitative, qualitative सारे factors आप लेते हो, उसमें even short factors which are determining the short term ability as well as factors which are determining long term ability, and based on that you identify some of the factors which are more important for you, and accordingly you rate the suppliers. Okay, now the factors are actually classified based on the importance to your organization. So appropriate weights are provided, and after that what you do is you work out a weighted score. Whichever supplier has the higher score is the most preferred one. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So that's how we go. Now going forward, which strategy, which is a better option, whether we should go for a single sourcing or multiple sourcing, or should we collaboratively come together and source, or we go for e-procurement, and other than that there are other methods also which people do follow. Okay, कई बार procurement में even barter system जैसे भी होता है कि you do this for me, I will do this for you. A relationship, and in that you tend to actually bring down your cost further. For example, when Tata's entered into the strategic tie-up with Fiat, okay, Fiat supplied them with the engines, car engines, and Tata provided them with a space in their showrooms. तो आप देखे होंगे कि बीच में कुछ समय के लिए फिएट की कार सारी की सारी आपको टाटा के शोरूम में वो भी मिलती थी, but then this didn't last for a longer time and then it ended. So वो टाइम पर ये भी एक तरह का स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी था. ओके, उसके बाद में डिसाइड कि नहीं वो उस तरह से नहीं चलेगा, we will have to dissolve this agreement and we need to rethink on some other alternative. क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि लोग आते थे टाटा के शोरूम में, टाटा का व्हीकल्स देखते थे और फिएट का खरीद के चले जाते थे. So that was not helping Tatas. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now what was the way forward? So लोगों ने उस तरह से फिर they worked out. Now coming back to single sourcing and multi sourcing, there are advantages as well as disadvantages when we talk about both the strategies. Whatever is advantage in case of a single sourcing becomes a disadvantage in case of a multi sourcing. Multi sourcing means I will be sourcing from multiple suppliers. So if I am buying from a single supplier, I can place a bigger order, and when I am placing a bigger order, I will be able to take advantage of the
economies of scale. But at the same time, okay, if I'm going with multiple suppliers, then I need to split my order. And when I have to split my order, that is no longer a advantage, it becomes a disadvantage. But now, in case of a multiple supplier, for example, when Best wanted to procure buses for them, okay, additional buses, that time they placed order with Tata's as well as Ashok Leyland. Though the L1, that is lowest bidder, was Tata's. So major chunk of the order was given to Tata's and a small chunk was given to Ashok Leyland also, and they were asked to match the price. Okay, at the same price, they were also given a small chunk. Now, what happens here is this will always keep the other suppliers on their toes. Okay, why? Agar if I am not going to perform, automatically the other supplier will become a preferred supplier, and if that happens, that means I will be losing. Okay, so that way, that competition is always maintained. Because of that competition, you tend to gain advantage out of it, क्योंकि वो सामने वाले का services better हो जाता है. Fine. Yes, sir. Yes, sir. In case of a single single supplier, you can work with them, you can develop with them, but in case of a multiple supplier, you cannot work personally and you cannot develop them to that extent what you could have done for a single supplier. But at the same time, when there are multiple suppliers, the competition within them will keep them motivated to come up with innovative practices, innovative products, innovative pricing. Okay. जैसे लोगों ने पहले जो ऑटोमोबाइल के काफी पार्ट्स थे जो सब कास्ट आयरन के ही बनते थे, बाद में लोगों ने आइडिया लगाया कि प्लास्टिक्स के भी बनाए जा सकते हैं एंड सेम क्वालिटी सेम परफॉर्मेंस लेवल, एंड ऑटोमेटिकली some of the suppliers who were able to innovate and who were able to supply that kind of products, basically with such a low cost, made out of plastics and same performance level, it helped in bringing down the cost of the overall automobile. So definitely उन लोगों को advantage थे, so they switched over. So all these things are only possible when there is a competition, healthy competition. Are we clear? Any doubts there? No, sir. Okay. अब इसमें ना कई बार कुछ कंपनीज और भी अलग तरह से भी टाई अप करती है. फॉर एग्जांपल a company who is into water tank manufacturing like Syntex, okay, and a company which is into say Nirma detergent manufacturing. अब दोनों का मार्केट सेम है, दोनों का अगर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन भी नियर अबाउट सेम है, सो दे बोथ कैन टाई अप एंड सेंड देयर प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम. ओके, सो द सेम व्हीकल कैन बी यूज्ड. अब सिंटेक्स टैंक्स तो ऐसे खाली रहेंगे, करेक्ट. ट्रांसपोर्टर तो आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी के हिसाब से लेगा एंड द वेट. सो आपका अगर टैंक पूरा खाली जा रहा है तो आपको ओवरऑल कॉस्ट काफी ज्यादा आती है, बट उसी में अगर आपने कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स भी डाल करके भेज दिए, ओके, सो यू आर एबल टू शेयर द कॉस्ट एंड बाय शेयरिंग द कॉस्ट इट कम्स डाउन ड्रास्टिकली. ओके, सो इस तरह के काफी ऐसे स्ट्रेटेजिक टाई अप्स वगैरह भी किए जाते हैं. कभी कभी वर्कआउट होते हैं, कभी कभी नहीं वर्कआउट होते हैं, अपने अपने चैलेंजेस है. बट क्यों नहीं वर्कआउट होते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ केस स्टडी. तो वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है. सेकंड इज कोलैबोरेटिव सोर्सिंग. कोलैबोरेटिव सोर्सिंग मींस a couple of people, they join hands together, couple of organizations, and then they place a single order. Very good example is this Manish Market जो इधर पर है अपना मुंबई में, ओके, वो लोग
खुद मतलब अभी इंडिविजुअली अगर खुद से सारे जितने भी उधर पर शॉप ओनर्स हैं वो लोग अगर इंडिविजुअली खुद से मटेरियल प्रोक्योर करने जाएंगे तो इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उनको वॉल्यूम्स उतना नहीं मिलेगा. सो व्हाट दे डिड वाज दे टाइड अप टुगेदर and after tying up they used to place a single order with Chinese manufacturers और पूरा कंटेनर लॉट का कंटेनर लॉट उठाते हैं. That's the reason why you will see जब उधर पर आप मटेरियल एक के पास में जो डिजाइन देखते हो वो बाकियों के पास भी सेम नजर आता है. ओके, प्राइसिंग 19-20 वाला हिसाब रहेगा. एंड देन व्हाट हैपेंस इज if you start negotiating also you will see that it comes down to a level and below that level they don't go, because that's a kind of understanding between them. That itself says that there is a cartel formation. Yes, sir. Clear? Yes, sir. So that's collaborative sourcing. People collaborate to source. Okay. Again, there are agents also which help you in terms of sourcing. एक कंपनी का एक X रिक्वायरमेंट है, दूसरे कंपनी का Y रिक्वायरमेंट है, और ये बंदा उधर से वो सप्लायर से पूरा बल्क में उठाएगा और इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. They are like traders. And at times they operate only just on commission. Okay. So when we had been to Hong Kong, that time we came across one such guy. He was a Sindhi guy and he was there in China for in Hong Kong for more than 20 years. So बंदे का काम यही था. And he was very good with Chinese also. तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर के साथ में प्रॉब्लम ही होता है कि उनको चाइनीज के अलावा बाकी दूसरी चीजें नहीं जाती है. So you cannot communicate with them. So these intermediate mediators, they basically help us in terms of facilitating that communication too. Okay. E-procurement is another strategy which is quite popular nowadays. It helps you in terms of bridging the gap in when we talk about locations. आपको इंडिया के किसी कोने का भी आदमी आपका टेंडर बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है. Not only just them, but even global suppliers can also participate. It provides a bigger platform. At the same time, competition becomes tough. Okay. It's a part of B2B, no? Sorry? It's a part of business to business transactions, right? It's a part of B2B, no? Business to business transactions. Yes, it's a part of B2B transaction, but e-procurement is not only just B2B, it can be B2C, C2C also. Example is OLX. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. So there are multiple formats in which it can operate. Just a second. Okay. So e-procurement has become a trend nowadays. Even we are more comfortable with e-procurement. Amazon पे जाकर के जो भी चाहिए बस order place कर दिया. Correct? You have a lot of bouquet of products to actually go through, find out the most suitable one, place an order and go ahead. Correct? So ऐसे काफी प्लेटफॉर्म्स हैं एंड ऐसा नहीं है कि सब कुछ Amazon बेच रहा है. सेलर्स तो दूसरे भी होते हैं ना. हाँ सर. And Amazon has only just provided that platform. So that's how they actually work. Fine? Yes, sir. So again, when we talk about e-procurement, it has got its own advantages as well as disadvantages too. But advantages are more as compared to the disadvantages, and hence it is always preferred. Clear? Yes, sir. Yes.
ई प्रोक्योरमेंट में आपका टाइम भी काफी कम लगता है, कंपैरिजन ऑफ बिड्स बिकम्स इजी, क्योंकि आपको डेटा उसी हिसाब से मिलता है, आपको अलग अलग तरह से फिर उसको करना नहीं पड़ता है। आपने एक टेम्पलेट दे दिया, एवरीबडी हैज टू फिल इट इन दैट टेम्पलेट ओनली, एंड देन कंपैरिजन बिकम्स इजी, आपको कंपैरेटिव चार्ट फट से मिल जाता है, सो यू नो whom we should place that order. आपको सिर्फ सप्लायर्स का बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है। Fine. Yes, sir. The other thing is, since e-procurement actually helps you in terms of even going forward with global sourcing, that means you can source from anywhere. Okay, but when we talk about global sourcing, it is again plagiarized or limited or challenged because of the cross-border taxes and tariffs. फिर एंटी डंपिंग ड्यूटीज, बहुत सारी चीजें आ जाती जिसकी वजह से कि इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट इफ यू enter into a free trade agreement with some countries, then this becomes then this is a game changer. For example, I will share what our personal experience had been with Sony. Okay, Sony ने पहले जब इधर इंडिया में वो करना शुरू किया, okay, so they used to import their products, but जैसे जैसे इधर competition tough हुआ, so and government actually promoted the in-house manufacturing, so they also started getting the SKDs and we used to assemble for them. Okay, but the day there was a free trade agreement with Thailand and Sony had a facility set up at Thailand, so that means free trade agreement की वजह से क्या हो गया, अभी उनको कोई भी टैक्सेस वगैरह, काफी एक्साइज ड्यूटीज वगैरह वो सब पूरे एग्जम्प्ट हो गए, तो इमीडिएटली they stopped manufacturing here in India and they started importing again. Okay, so this is how things change. So global sourcing में भी कई parameters हैं which actually play around, and what Narendra Modi is actually doing right now is he is facilitating these things. ज्यादातर कंट्रीज में जाकर के इस तरह के एग्रीमेंट्स वगैरह वो कर रहा है, ताकि हमको क्या चाहिए वो हम उनके पास से इजीली ले सके और उनको क्या चाहिए वो हम उनको दे सके। बट हमेशा हिसाब इट्स लाइक गिव एंड टेक, दैट मीन्स गिव कम फर्स्ट। अभी आपने देखा वैक्सीन कई कंट्रीज को फ्री में भेजी गई है, बट कुछ कंट्रीज को चार्ज किया गया है। ओके, सो वहां पर जहां पर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं वहां पर चार्ज भी किया जाएगा, बट बिजनेस तो होना है। सो आज की डेट में जो वॉर स्ट्रैटेजी है ना, इट इज थ्रू ट्रेड, एंड दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग विथ अस। हमारे इंटरनल कैपेबिलिटी स्किल कर देने का, तो उसके बाद में then there will be a lot of dependency with China, then they can take advantage of it, and we are not realizing it. We always look for lower cost products and we switch over to that. Now today the situation is we don't have that capability. There was a time when small consumer electronic goods like iron, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, okay, हाँ, वो सीविंग मशीन्स, ये फिर वॉल क्लॉक्स, ये सब इंडिया में बनते थे। टुडे द सिचुएशन इज बिकॉज चाइना इज गिविंग अस अ चीपर मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस, ऑल द कंपनीज हैव एक्चुअली शिफ्टेड ओवर टू चाइना। अब हमारा इधर पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच, ओके, हैव यू सीन दोस टॉयज, ये जो सिग्नल्स पे कुछ लोग देखो वो सब खिलौने वगैरह भी बेच रहे होते हैं, देखा है सर, है ना, कितने चीप प्रोडक्ट्स हैं हम लोग। वर्स्ट थिंग इज वी डोंट मैन्युफैक्चर दोज आल्सो हियर इन इंडिया, yes sir, because the manufacturing capability has got finished almost. कुछ ही एरियाज है जहां पर कि सच में हो रहा है,
और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे MI वगैरह जैसी कंपनीज हैं जो कि किट्स उधर से मंगाती है, 2 स्क्रू लगाती है और बोलती है मेड इन इंडिया. That is where we have. So made in India needs a boost. अब उसमें भी वो boost possible नहीं है. It is very difficult until unless mindsets of people don't change. Sorry, I'm sharing something out of the context of our syllabus. इंडिया में ना पहले रिसेशन नहीं होता था, पहले सिर्फ सूखे की वजह से प्रॉब्लम होती थी बिकॉज दे वेर डिपेंडेंट ऑन वाटर, रेन्स. करेक्ट? तब रिसेशन नहीं होता था. बट रिसेशन कब से होना शुरू हुआ? जब से लोग अपने अपने काम ना करके लोगों को नौकरी का चॉइस ज्यादा हो गया. नाउ पीपल डोंट वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन. अब जो कास्ट सिस्टम को जिसको हम लोग गाली देते हैं, इट हैड इट्स ओन एडवांटेजेस आल्सो. जो बंदा पॉटर होता था वो अपना पॉटरी बिजनेस में वापस लग जाता था. हम लोग सोनार, गोल्डस्मिथ्स, हम लोग अपने बिजनेस में लग जाते थे. बट वी डिडंट. नाउ एज द टाइम हैज पास्ड बाय, नाउ वी आर लुकिंग एट, अरे यार उतना मगजमारी कौन करेगा, किसी के पास में नौकरी कर लेते हैं, फिक्स सैलरी मिलती रहेगी. Okay, that mindset is a problem. That mindset is a problem wherein we want to be in our comfort zones. Okay. I agree, sir. So अभी ये चैलेंज, अभी ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? Yes, yes, Patricia. So I wanted to ask that this chapter, operations planning, and this chapter, material requirement planning, are they the same? Sorry. Operations planning and Material requirement planning. both are 2 different chapters. They are different. But sir, then this operations planning, this chapter is not there in the book, and I need to find numericals on that. So I'm not like I'm just searching for that. So I was just thought I'll ask you, because the thing is that we can discuss it after the class. Okay, thank you. So basically what is happening here is the thought process, the way things are being thought about. Okay, the way things are actually moving forward. So we are more comfortable with salaried jobs, trading instead of actually manufacturing, and that is where the China has an advantage. आज हम लोग अगर चाइना की वजह से जो इतना कोविड वगैरह सब कुछ हो गया, हाँ, और एक वायरस के बाद में दूसरा वायरस, फिर तीसरा वायरस. So what they are doing is they are basically killing the economies of other countries and they are increasing the dependency. उसके बाद में हम उनको कुछ कर भी नहीं सकते हैं. 4 गाली वो हमको फिर भी देगा तो भी हमको बैठ करके दबा करके चलने का ही है. Okay, so we need to learn, and we have to learn from our mistakes, and that is one of the reason why Made in India is being pushed a lot. Okay, so global sourcing, coming back to this thing, global sourcing helps you in terms of actually going global. उसका benefit ये होता है कि you are able to take advantage of lots of things. अब global sourcing से you not only just the product but also the culture also comes in. For example, tea वाला जो practice है was never a part of India. We got it from the Britishers. ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं. Even samosa, what we cherish, was not a original product of India. Rice बोल रहा हूँ, wheat.
हम लोग व्हीट कभी खाते ही नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ सब। यहाँ पर ज्यादातर इट वाज ज्वारी एंड बाजरी। सो अभी आज हम लोग बोलते हैं कि दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसके लिए हम लोगों को वो खाना चाहिए। सो नाउ इट हैज बिकम अ लग्जरी, बट वहीं पर बीच में इट वाज जो गरीब लोग हैं वो लोग खाते थे, अमीर लोग व्हीट खाते हैं, आटा, गेहूं का आटा। So that is how Britishers actually portrayed us and we started following them. And जब भी कोई आदमी दूसरों को फॉलो करता है rather than cherishing whatever that good that they have, okay, they always land up in a situation like where India is today. Anyway, coming back, sorry for this. No problem, sir. So normally supply chain has three, we can categorize all the flow that is within a supply chain into three categories. One which moves forward, that means from manufacturer to the customers, and not only just okay, from manufacturer to the customers. Second is what goes backward, that is from the customers to the manufacturer. And third is both ways, something which are actually exchanged across between the two. So forward is your goods and services which a company provides to the customers. Backward is payment of goods and returns. And both ways is the information. When company is sharing the product information with the customers, and customer insights, customer requirements are shared with the organization. So it actually flows both ways. So these are the three channel flows which becomes very important. And nowadays, instead of materials management, okay, people have gone forward and are looking forward to flow management now. Not only just material, but also the information, the money. Okay, everything needs to be controlled. So today the new term is flow management instead of just materials management. Supply chain basically suffers from following challenges that it has to go through. First that we come across is called as bullwhip effect. Now, how do we explain it? Okay. Say a consumer has a requirement for 1 unit. Okay. He goes and places an order, or rather he buys it from a retail store. He was left out with, he was only just having 2 units in the inventory left out, and he has already sold 1 unit to him. He is left out with 1 unit now. Do he need to reorder? Do he need to reorder? Yes, no. Based on the demand, yes, sir. So if he has to reorder, how many units will he place an order for? Expected demand. As per you, Okay. sir. How much should be the expected demand? अभी ये बंदा 1 यूनिट लेके गया, मान लो 4 यूनिट मंगा लोगे, 5 यूनिट मंगा लोगे, या 3 यूनिट मंगा लोगे, मान लो अगर स्लो मूविंग है तो, करेक्ट? एक यूनिट तो नहीं मंगाओगे ना? No, Yes, sir. sir. We can say that he will order it on the basis of weekly or monthly basis. करेक्ट. तो अगर मैं वीकली डिमांड की भी बात करूं तो मैं मान लो मैं 3 यूनिट मंगाता हूं. Fine. When he places then he is going to place an order with the wholesaler 3 यूनिट्स के लिए. होलसेलर जब ऑर्डर प्लेस करेगा मैन्युफैक्चरर को, कितना यूनिट्स के लिए प्लेस करेगा? 5 units, ordering for 6 more. units. Yes, sir.
definitely more than what is required here. So say, let me say I place an order for say 6 units. Normally इतना नहीं होगा, इससे भी ज्यादा होता है, ठीक है? So he will place an order with the manufacturer for 6 units. How many units will he procure if he has to procure? Around 8 to 10. Basically one shift में कितना हो सकता है, बराबर है? Yes, sir. मान लो एक शिफ्ट में 10 यूनिट हो सकता होगा, तो वो सीधा 10 यूनिट बनाएगा, इन्वेंट्री रखेगा और उसको देता जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. But when he has to place an order for, he has to manufacture 10 units, that means he will place an order for 10 units. तो ये बंदा, जब ये बंदा 10 यूनिट इसको दे देगा, तो ये अपने सप्लायर को कितना यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा? 10. Possibly 10 Or or 15. more than 10. Correct? 10 or more than 10, correct? I Yes, sir. assume it to be around 15, क्योंकि उसको कुछ थोड़ा तो इन्वेंट्री भी रखना पड़ेगा. Right, sir. Fine. Now what is happening is, this is what is a bullwhip effect. इस साइड में फ्लक्चुएशन कम है, इधर 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 पर और ज्यादा हो जाता है. ओके, कभी ऐसा किया है एक बड़ी लंबी रस्सी लेकर के उसको वेव करना शुरू करो एक एंड से, तो दूसरे एंड तक बड़ा बड़ा वेव्स बन जाता है. इधर पर छोटा भी बनाएगा तो दूसरे एंड में बड़ा वेव्स बनता है. Yes, sir. So that is what is happening here also. Here the variation is less, but by the time it reaches here, it's huge. Okay, so now what is the solution to this? एक तरह से देखा जाए तो कितना इन्वेंट्री इधर पर सप्लाई चेन में ही ऐड हो जाता है, और वो उसका पैसा जब रियलाइज होगा तब होगा. So till then it is stuck. So what happens is, if there is a kind of a Kanban system all across, then अपने आप कम हो जाएगा ना ये फ्लक्चुएशन. Yes, sir. Yes, sir. And if the other person knows very clearly कि इसके पास में कितना यूनिट्स है इन्वेंट्री में, उसका मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, क्या पैटर्न है, so then accordingly he can stock or he need not stock. Correct? Similarly for him. So two things becomes very important here is the information. Okay, that is transparency all across, and the JIT system. That will help you in terms of reducing the unutilized inventory stacking up within the supply chain. Okay, this happens because of the bullwhip effect. So the solution is information, transparency all across. Okay, इसके लिए आप देखिए अभी आजकल ज्यादातर companies they go for extended ERP and they include their suppliers as well as their distributors also on the same platform, so that they know कि उनके पास में मैंने कितना मटेरियल दिया था, अभी कितना बाकी है, कितना मूव ऑन सेल होना बाकी है, सब मालूम पड़ता है. Okay, then the other challenge which any doubt there in case of a bullwhip effect? No, sir. Okay, now moving forward, that is the other challenge that they see is backloading. That means there was an order from X place, I have sent my vehicle, order has been delivered, now my vehicle has to return empty. That's a challenge. Now if somebody can give me an order from that side also while returning back, then my total cost of commuting or rather transportation will come down drastically. अभी जो बंदा मेरे को 5,000 रुपए मान लो लेता है इधर से कोल्हापुर ट्रांसफर मतलब मटेरियल भेजने के लिए, ओके, उसको पता है उधर से आते वक्त उसको एमटी आना पड़ेगा, तो वो एमटी का भी कॉस्ट मेरे ऊपर ही लोड करने वाला है. जैसे रात के टाइम पर हाफ रिटर्न चार्ज करते हैं ना ऑटो, Yes, sir. ऑटो वाले Yes, भी sir. टैक्सी वाले भी, करेक्ट ना? हाँ सर, करेक्ट. Yes, sir. So
वो चीज ओला वाले नहीं करते हैं, उनका पहले से ही फ्लक्चुएटिंग वेरिंग रेट्स है डिपेंडिंग अपॉन द लोड डिमांड. So there are companies which are offering this kind of solutions also. For example, Porter. आपने कुछ टेम्पो वगैरह के ऊपर देखो, पोर्टर का लिखा हुआ देखा है? देखा है सर. Yes, sir. हाँ, तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो तो बड़े मजेदार चीजें मालूम पड़ती है. Okay, that's the reason why I say all the management can be seen all around you. You don't need to actually, all you need to do is just observe, record, investigate, you will learn. फिर इधर हिरेंद्र सोनी को कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है. Okay. Then the other challenge is materials management across the supply chain. I can manage materials management practices within my, say, if I am a manufacturer, within my facility, but when it goes to the wholesaler, is he also managing it properly? So then I need to define SOPs, how they should be doing it. Okay. But even after defining the SOPs, are they still following or not? Don't know. आपने देखा है कभी भी कुछ मटेरियल्स का पैकेजिंग खराब रहता है, पूरा डैमेज हो गया रहता है, अंदर मटेरियल ठीक है, बट व्हेन यू हैव टू बाय इट यू विल नॉट बाय दैट, यू विल ऑलवेज प्रेफर अ फ्रेश पीस विद इंटैक्ट पैकेजिंग. करेक्ट? नाउ व्हाई द पैकेजिंग गेट्स डैमेज्ड? आपने बोला था ड्यू टू ओवरस्टैकिंग. हाँ, करेक्ट. सो अभी ये प्रैक्टिसेस कौन मैनेज कर रहा है? मैन्युफैक्चरर मैनेज नहीं कर सकता है. He has passed on the baton to the next member in the supply chain. He has to do it. अमूल का इतना सारा प्रोडक्ट्स वगैरह का जो रिटेलर्स हैं वो लोग क्या करते हैं मालूम है? कई बार रात को, क्योंकि फ्रिज रात को पूरी रात चालू रहेगा तो मेरा उतना बिल आता है, सो लोग रात को बंद कर देते हैं. कभी कभी बंद कर दिया तो उसकी वजह से वो सफिशिएंट कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाती है, द प्रोडक्ट्स गेट डैमेज. फिर वो क्या करेगा? वो वापस सप्लाई चेन में रिटर्न में वो प्रोडक्ट डाल देगा, बोलेगा भाई ये मटेरियल डैमेज है, सही नहीं है, गिव मी अ रिप्लेसमेंट. सो आपका मैन्युफैक्चरर का तो कॉस्ट लग गया ना इधर से उधर तक भेजने का और फिर वापस रिटर्न का. Yes, वो sir. कॉस्ट कहाँ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. सो रिटर्न्स बिकम्स अ चैलेंज. तो उसको फिर अपने आप वो सब चीजों का भी प्रोविजन रखना है, एंड दैट्स व्हाई द कॉस्ट विल गो अप. याद है मैंने आप लोगों को लिपस्टिक वगैरह का प्राइस वगैरह पूछा था, कॉस्ट. सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, बट जो बाकी के कॉस्ट है ना वो सब इस पर ऐड हो जाते हैं. कई कॉस्ट के लिए यू नीड टू मेक प्रोविजन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. ओके, सो more the efficient your supply chain is, better would be your profits. Okay. Yes, sir. Yes, Now, sir. supply chain also gets reconfigured depending upon the type of relationship and the nature of business that you are involved into. Whether it's a business to business transactions or business to consumer, consumer to business or customer to customer. अब इसमें बिजनेस टू बिजनेस एक तरह से देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, these are business to business transactions. When we say business to consumer, this end retail store to consumers, these are your business to consumer. Business to consumer. Then there is, अभी इसमें business to consumer में बहुत सारे examples हैं. Amazon हो गया, Flipkart हो गया, these are also business to consumer. Okay, now coming to consumer. Example? OLX बोला. OLX picker. OLX. Very good. So Very easy. OLX है. अब यही अगर सर्विसेज में अगर मैं बोलूं तो can you think of something? विकिपीडिया. कौन उसमें फिल कौन करता है? इंफॉर्मेशन कौन भरता है? The ones who are consuming Anyone it. can fill it. Anyone can fill it. So consumers themselves are the supplier also.
Right, sir. ओके, तो अगर आप अपने अराउंड सब चीजों को देखना शुरू करोगे ना, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स अराउंड. Okay, now in all these things, the thing which becomes very important is your information network. जितना strong आपका information network होगा उतना better है. You should be able to capture information from the market, the way it is being used and the way you are actually using it. अब लोगों ने देखा कि कुछ लोग पेन को भी ऐसे स्टाइलस की तरह यूज कर रहे हैं. So then they realized कि अगर मैं पेन में ही स्टाइलस के जैसे अगर बना के दूं, I will be able to fetch more value. So all that is required is you need to observe how your products are getting consumed, how it is being used, and you get new ideas from there. Okay. Yes, sir. The basic 5 basic components of SCM is planning, sourcing, making, delivery, and then return. Plan, source, make, deliver, and return. Okay. Normally, when we talk about planning, this is what is going to consume the maximum time of yours. Okay. ये सबसे crucial है, सबसे ज़्यादा time यही लेने वाला है. Okay. Sourcing is about procurement, manufacturing. This talks about your logistics, that is delivery mechanism, and return is about the products that you get in return. Okay, but not only just that, but also money or information, वो सब चीजें भी आती हैं. Fine, but इसमें main concern area is product returns, because that is going to cost you money. So reverse logistics plays a role in that, right? Sorry, Reverse logistics plays a role in return, right? reverse logistics is Is a key important in return. Now, means by delivering logistics and return, we reverse logistics concept is there, right? yes. It basically talks about reverse logistics. When we are talking about return, this is very broadly covered under SCORE model, that is supply chain operations reference model. Okay, this becomes the base for it. Okay, sir. ठीक है. अभी हम anyway एकदम से उस पे PhD नहीं करने का है, तो हम उतना डिटेल में नहीं घुसेंगे. The problems which are addressed by supply chain, that is in terms of defining the distribution network configuration, in terms of number, location, कितने suppliers होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, कितने distributors चाहिए, कितने wholesalers चाहिए, so that I am able to cover the market. Okay, so distribution network configuration. अभी मैकडोनल्ड्स ने एक ही प्राइमरी फ्रेंचाइजी से ही उसका सब काम हो जाता है, करेक्ट. बट कभी कभी आपको जब दिखता है कि वो पूरा सब कवर नहीं कर पा रहा है, सो देन यू अपॉइंट एन अनदर वन एंड यू डिवाइड द रीजन बिटवीन देम. ओके. Yes, sir. Yes. This becomes one challenge which is actually addressed by supply chain management. Second is the distribution strategy in terms of operating control, whether the decisions have to be made centralized, decentralized or shared. अभी जब आप लॉजिस्टिक्स वाले को वो गाड़ी ट्रक भी भेजते हो, तो उसको कुछ पैसे भी दे करके रखते हो कि भैया बीच में अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो इससे मैनेज कर लेना. ओके, टायर फ्लैट हो गया, मामू ने पकड़ लिया. Lots of things are there. Okay. Yes, Then Yes, sir. we will also look at delivery scheme under distribution strategy, mode of transportation, how we are going to do, whether it's going to be a single mode or multi-mode. We call it as multimodal transportation. Multimodal में मतलब आप multiple modes use कर रहे हो, combination. एक point A to point B मैंने train use किया, उसके बाद में मैंने फिर उसके बाद में उधर पर से ट्रक यूज किया, उसके बाद में और छोटे छोटे एरियाज में जाने के लिए मैंने छोटे छोटे टेम्पोज यूज किए, और फर्दर अंदर जाने के लिए साइकिल से भी जाकर के डिलीवर किया, और मोटर बाइक्स. ओके, नॉर्मली ये जो लास्ट वाला रहता है, वी कॉल इट एज लास्ट माइल डिलीवरी चैलेंजेस. ओके, देन replenishment strategy, whether when to replenish, how much to replenish and all.
how we will come to know ki, when it is to be replenished. Fine. Then transportation control, whether I am going to own my own transportation vehicles or I'll be tying up with a third party. Okay. Again, tie up karna hai ya one-off contract rakhna hai. All those things will be covered under distribution strategy. Then we also trade off in terms of logistical activities, like whether we want to go ahead with full truckload or half truckload, which is actually called as less than truckload. So इसमें कई बार जो consolidators होते हैं वो काम में आते हैं. वो क्या करते हैं, 4 लोगों का orders लिया, एक full truckload के बराबर किया, where the destination is the same, they combine them together and then it is pushed across. Okay. So that way they are able to make the delivery at a cheaper cost. But then उसमें उनको wait करना पड़ता है जब तक और भी दूसरे orders for the same location don't come in. Okay. Then information sharing across the supply chain becomes another challenge, another deliverable by the supply chain management. Inventory management across the supply chain, cash flow. These are some of the things which they actually focus upon. Supply chain management functions can be broadly categorized into strategic, tactical and operational level activities. So इसमें जो आपका network optimization, strategic partnerships और ये सब की हम बात कर रहे थे, that goes under your strategic level. Okay. Second, जो भी अभी हमने अभी डिस्कस किया tactical में, जैसे आपका transportation strategies वगैरह हो गया, that goes in the tactical level. Inventory decisions, production decisions, benchmarking, ये सब आपका tactical level पे आ जाएगा. Then third is your operational level. Operational level में we start talking about your inbound operation. कितने बजे वो गाड़ी आनी है, कितने बजे उसका loading होकर के जाएगा. So those are your outbound transportation. Production operations, wherein we plan our schedules also कि ये particular time पर deliverable है, उस हिसाब से we will produce at so and so time and it will be passed on to the distributor. ठीक है. So that is your operational level activities. सोर्सिंग वगैरह, सोर्सिंग का प्लानिंग वगैरह लोकल लेवल पे वो होगा, बट जो मेजरली गाइडलाइंस आर डेवलप्ड एट द टैक्टिकल लेवल, और उससे भी ब्रॉड वेदर वी वांट टू गो फॉर सिंगल सोर्सिंग, मल्टी सोर्सिंग, ई प्रोक्योरमेंट, दैट इज एट द स्ट्रेटेजिक लेवल. ओके. योर सप्लाई चेन एक्चुअली एक्ट्स एज अ value delivery chain because value gets added at all the stages within a supply chain. Okay. So inbound logistics में, process में, outbound logistics में भी. So inbound हो गया जब आपका raw material आ रहा है within the factory. Process logistics, how it is actually moved around within the factory. That means आप स्टोरेज से उठा करके प्रोडक्शन लाइन में लाते हो, प्रोडक्शन लाइन से फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर हो रहा है. सो दैट इज इंटरनल लॉजिस्टिक्स, दैट इज प्रोसेस लॉजिस्टिक्स. फिर आउटबाउंड होता है व्हेन इट इज डिस्पैच्ड. इट इज डिस्पैच्ड आइदर टू द वेयरहाउसेस और डॉकिंग सेंटर्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. Done. With this, we are through with this.